Hello friends, we begin with a new chapter. The name of that particular chapter is Solutions. नाम तो सुना होगा आपने. Now when you think about solutions, what is the first thing which comes into your mind is, and that is, okay, it is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Now what is the meaning of this? Homo means one, genus means phase. So that means it is having what? One phase. Now what is the phases? It is something which is nothing but physically distinct and mechanically separable part of the system. The one which I can see, the one which we can inhale and identify. Okay, that there is going to be some changes, some differences. Okay, so that is called as what? Phase. Okay, it is not related to the number of substances. Please be very clear. Okay, I talk about air, simple air. I'm not going to identify that how much is nitrogen, how much is going to be oxygen merely by means of smelling. I cannot see them also, okay, because they are colorless gases. But then still, oxygen is present, nitrogen is present, some inert gases are present. So there are many substances present, but still I consider it as what? One phase. Okay, and therefore I say air as homogeneous. Alright, so please don't confuse with the number of phase is equal to the number of substances. No. Okay, if I take a glass of water and I add into it salt, I add into it, say, some sort of sugar, okay, and I stir it, it still is one phase, in spite of the fact there are three substances, water, salt, sugar, but it looks like only one. Alright, so homogeneous means what? Having one phase. Mixture means you understand that there has to be what? More than one substance is present. Just now as I was talking about. Okay, water and sugar, there are two substances, but it is making one phase. So I call it as simply as what? Solution. You getting it? Yes. So it's a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, that is called as what? Solutions. Next thing is, it's made up of two components. Now see, I'm using the word components. Substances can be many. Of course, many means at least it has to be two. I cannot call it as one and I call it as a mixture. No. कम से कम दो होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. अभी उसके दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट. ओके? सल्यूट वो होता है which gets dissolved, जो खुद डिसॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं सल्यूट, और सॉल्वेंट वो होता है which dissolves others. मतलब others मतलब क्या है? Dissolves the solute. जो दूसरे को डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट है और जो खुद डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्यूट. समझ में आई बात आप लोग को? यस. अभी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यस व्हाट इज द सॉल्यूशन, फिर उसके दो कंपोनेंट. अब हम बात करेंगे अबाउट उसके टाइप्स के बारे में. ओके, सॉल्यूशंस का टाइप्स क्या है, एंड दैट टाइप इज बेस्ड ऑन द पीएस. नहीं समझा पीएस क्या है? मैं समझाता हूं. इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, दैट इज वन इज सॉल्यूट एंड द अदर इज सॉल्वेंट. ठीक है. सो सॉल्यूशन का टाइप्स किसके ऊपर आधारित है? फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट. ठीक है. तो मैं आपको एक टैब्यूलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, सो वी गो फॉर द टेबल. इसमें पीएस ऑफ सॉल्यूट, next we have is pH of solvent, and I give you some examples so you understand this very well. Okay, some example. ठीक है. So we begin with solute. I keep it as all of them as solid. और यहाँ पर I change the physical state of the solvent. As this, liquid, solid, gas. ठीक है, ऐसे करते हैं. तो we begin with
So this is a solvent which is generally in major proportion and solute is generally in a minor proportion. ये याद रखिएगा. Okay, that is the solvent is in generally major proportion and solute is generally in a minor proportion. So we begin with solid solute, liquid solvent. So best example is sugar in water. शुगर सल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर लिक्विड है और शुगर इज अ सॉलिड. सिंपल एग्जांपल. Solid. Best example is alloys. Alloys, you know very well, it's once again, it's a homogeneous mixture of two or more elements. At least one of them has to be a metal. Okay, तो metal combination, it gives you what? Alloys. जैसे कि मैं आपको example देना चाहूँगा, brass, bronze, okay, copper, zinc, copper, tin, okay, brass is copper and zinc, bronze is copper and tin, okay, ये दोनों metals को हम लोग ने mix किया है, both of them are in a solid state, okay, so solid and it is called as what? Alloys. यहाँ पे copper, ये दोनों में copper is in larger proportion, okay, so it can behave as a solvent, and the one which is in a minor proportion, that is say tin, okay, or zinc, okay, that is going to be nothing but solute. Solid gas, okay, that is to be considered. अभी solid gas में कौन सा वाला example आएगा वो हमें सोचना, and that is nothing but iodine in air. Okay, iodine is a solid. ठीक है. Now when it is in air is nothing but what? It's a mixture of gases. Okay, so iodine is going to sublime very easily and is solid getting converted into gas. So iodine vapors हो जाएगा, फिर वो तुरंत एयर में चला जाएगा. It becomes a solution and that is iodine in air. So ये हो गया पहला कैटेगरी. The first category is done. Okay, अभी हम जाएंगे सेकेंड कैटेगरी पे. अब ये तीनों सॉलिड हुआ, अभी हम तीनों लिक्विड कंसीडर करेंगे. Okay, यहाँ पर we keep the same sequence: liquid, solid, gas. तो liquid है, तो let us take an example of ethanol in water. Sugar in water था, solid था, ये liquid था, अब ये liquid है, ये भी liquid है. Okay, so that can be the example. Next one is we have liquid and solid. That means हम example ले सकते हैं यहाँ पर amalgam of metals. Say for example zinc amalgam. Amalgam मतलब nothing but it is mercury. Okay, mercury is a liquid metal. Okay, and the another metal is going to be a solid, such as zinc amalgam हुआ, so sodium amalgam हुआ. So those are going to be in the solid state. Understood this part? Liquid and gas. So the best example will be chloroform in nitrogen gas. Chloroform liquid है, alright, आप सबको पता है अच्छी तरीके से. And nitrogen is a gas, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है. So liquid in gas is chloroform in nitrogen. That's the example. Next category पे जाएंगे. Now solid हो गया, ये liquid हो गया. Now we go into gas. Okay, यहाँ पर it will be liquid, solid, gas. Okay, so now we consider a liquid, okay, and the solute is going to be what? Gas. So it is carbon dioxide in water. इसे carbonated water भी बोला जाता है. The fizzy drinks, okay, that is nothing but carbon dioxide is the gas in water. Okay, so carbonated water can be called as gas in solid, hydrogen gas on palladium. Okay, is being absorbed, hydrogen is being absorbed on the surface of palladium. So palladium is a solid metal and hydrogen is a gas. The last one is gas. Yes. Example everybody knows, I've been always telling you. और वो example क्या होगा? Air.
एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो तो आप जानते ही हो। ओके, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो इट कम्स आउट टू बी 99%। और उसके अलावा भी और गैसेस होते हैं, तो ये सब मिक्सचर है। ओके, और ये गैस वाला मिक्सचर इज नथिंग बट इट्स एन एग्जांपल ऑफ air. So I guess you understand this. This is the introduction part. I'll just take a quick recap. The chapter name is solutions. So how to define solution is it's a homogeneous mixture. Okay, that means it is containing what? One phase. But it is containing many substances. That's why I use the word mixture. उसके पास दो कंपोनेंट है, और वो दो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है, और माइनर कंपोनेंट है वो सल्यूट है। ओके, कई बार ऐसा देखा गया है कि सल्यूट 2, 3 ऐसे भी होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं हमेशा एक हो। ओके, लेकिन ज्यादा करके इस चैप्टर में हम लोग सिंपल बाइनरी मिक्सचर्स कंसीडर करेंगे। बाइनरी मतलब 2, मतलब एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसके बाद हम लोग ने जिक्र किया अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किसके ऊपर आधारित है? जी हाँ, ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो ये आपके सामने मैंने टेबल पेश किया। ओके, जहां पर हम लोग ने फिजिकल स्टेट कंसीडर किया सल्यूट का, सॉल्वेंट का, एंड देन कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि वो कंसेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना कैपेसिटी है टू डिसॉल्व द सॉल्यूट। Okay, that is to be considered. Now see what happens is, in the initial stage, शुरुआत में जब सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, इट डिसॉल्व्स, और क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। इस पूरे प्रोसेस को दोस्तों हम बोलेंगे dissolution. What do you call it as? Dissolution. And the process is going to be fast. लेकिन फिर क्या होगा? As the addition of the solute increases, the process of dissolution becomes slow. Okay? क्या होगा? स्लो होते जाएगा। पहले शुरुआत में जैसे हम लोग ने सल्यूट डाला तुरंत डिसॉल्व होगा, लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम लोग ने सल्यूट डाला, कीपिंग श्योर दैट द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, तो वो जो सोल्युबिलिटी का प्रोसेस है जिसे हम लोग डिसोल्यूशन का नाम देते हैं टेक्निकली, वो प्रोसेस धीमी गति से होगा। और एक स्टेज आएगा ऐसा कि वेयर नो मोर सल्यूट डिसॉल्व्स। Okay, no more solute dissolves, and I call that solution as a saturated solution. क्या बोलेंगे इसको? Saturated solution. और इस स्टेज पे एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। Okay, there is going to be an equilibrium. Now, how it is going to be, I'll just tell you, and that is, as I said, I have a solute, I add into the solvent. Okay, I get a solution. क्या नाम दिया था इस प्रोसेस का? Dissolution. I call it as what? Dissolution. Now, when I talk about equilibrium, there is a reversible reaction also. और ये reversible reaction that is called as crystallization. यानी if I am going to add more amount of the solute, then what happens is a stage is reached कि जहां पर वो solute dissolve नहीं होगा. It will be in the form of a solid. Okay, so what happens is if you go into the forward direction, the solute goes into the solvent, results in the formation of a solution. लेकिन if the quantity of the solute becomes more, then from the solution the solute comes out of it and it results in the formation of a crystal. यहाँ पर दोस्तों हम ये प्रोसेस को ज्यादा इजीली तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि the liquid is nothing but solvent and the solid is a solute. So जब तक सॉलिड जाता है लिक्विड में और वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी द सॉलिड गोइंग इनटू द लिक्विड, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन, एंड फ्रॉम द लिक्विड व्हेन द सॉलिड सेपरेट्स आउट, ओके, द क्रिस्टल सेपरेट्स आउट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिस्टलाइजेशन. ऑलराइट, सो देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम.
reach between dissolution as well as crystallization, and that particular process is called as saturation, yani maximum amount of the solute which gets dissolved in the given amount of the solvent. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, in the given amount of the solvent, क्योंकि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट मैंने बढ़ा दिया तो once again the solute can freely go on getting dissolving and the process of dissolution becomes once again faster. ओके जैसे जैसे मैं सल्यूट डालता ऐसे ऐसे समझो मैंने पानी भी डालना चालू किया तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है. सो इट ऑल डिपेंड्स एट अ फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट. सो इसलिए मैंने लिखा है द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है दोस्तों, आगे जाके मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी. ओके तो यहां पर मैंने टेम्परेचर फिक्स रखा है, मैंने अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट भी फिक्स रखा है. सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा ऐसे फिक्स कंडीशन में, ओके तब जाकर हम बोलेंगे कि द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी व्हाट सैचुरेटेड. क्या बोलेंगे हम उसको? सैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इफ आई एम एडिंग still more amount of the solute, so I call it as super saturated. अब वो उस वक्त उसमें dissolve नहीं होगा, it will be in the form of solid, okay, and that is what we say precipitation takes place. Okay, precipitation होगा. Precipitation का मतलब तो आप जानते ही हो, formation of a solid in presence of a liquid. So super saturated solution में precipitation takes place. इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा 3 प्रकार का solution होता है. ओके मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ US, मतलब जहां पर the dissolution is fast. Okay, that is US, मतलब unsaturated. फिर saturated और फिर SS. SS मतलब सुपर सैचुरेटेड. और प्रेसिपिटेशन यहां पर होगा, ये दोनों में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो जब तक सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व होते जा रहा है इन द सॉल्वेंट, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज अनसैचुरेशन. A stage is reached where no more solute is going to get dissolved in the given amount of the solvent at a given temperature. Then I call it as saturated. Okay, and beyond that, if I'm going to add a solute, not the solvent, I'm going to add a solute in the saturated solution. Then I call it as super saturation, and that added solute is not going to get dissolved, and that means it is remaining in the form of a solid in presence of a liquid, and that is called as precipitation. Okay, so I call that there is a precipitation taking place. Okay, the solution is super saturated. Am I clear with this? So these are the 3 types of solutions: the unsaturated solution, the saturated solution, and the supersaturated solution. I hope you have understood this very well. अब हम